Now let us discuss one more third one classification, the D block elements. So the definition is same, but a slight difference is there. So the elements in which the valence electron, the last electron, if it enters into the d orbital, they are called as D block elements. तो पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर हो गए तो वो एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा बोलते हैं. So generally the D block elements are they starts from third B to the second B group elements. So 1A, 2A S block elements है, third A, fourth A, fifth A, sixth A, seventh A, eighth A P block elements है. तो third B to second B they are called as the D block elements only. So in the third B group elements, if we have four elements, we have importantly scandium, yttrium, lanthanum, actinium. Fourth B में titanium, zirconium, osmium. So vanadium, niobium, tantalum, chromium, molybdenum, tungsten, manganese, technetium, rhenium, iron, ruthenium, osmium, cobalt, rhodium, iridium, nickel, palladium, platinum, copper, silver, aurum, zinc, cadmium, mercury. तो ये सभी थर्ड बी से लेकर सेकंड बी तक ये सभी एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स है. क्यों बोलो तो ये सभी एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर होता, तो इसलिए ये सभी एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसा बोलते हैं. सो जनरली द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव मेलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज डक्टाइल प्रॉपर्टी एंड मेलिएबल प्रॉपर्टी. तो मेलिएबल प्रॉपर्टी बोले तो ये सभी एलिमेंट्स को हम एक शीट जैसा बनाते हैं, एक शीट जैसा बना सकते हैं. सो द फॉर्मेशन ऑफ ए शीट्स एक शीट जैसा बना सकते हैं. सो इट इज कॉल्ड एज मेलिएबल प्रॉपर्टी. सो दीज एलिमेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग्स फॉर्म. एक थ्रेड लेकर बना सकते हैं, सो एक थ्रेड जैसा. सो दैट कॉल्ड एज डक्टाइल प्रॉपर्टी. शीट जैसा बनाए तो मेलिएबल प्रॉपर्टी बोलते हैं. थ्रेड जैसा एक स्ट्रिंग जैसा बनाए तो इसको हम डक्टाइल प्रॉपर्टी बोलते हैं. सो जनरली द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी वैल्यूज. तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा रहता. सो जनरली द डी ब्लॉक एलिमेंट दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये सभी डी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. सो दैट्स वाई these elements are they are good conductors of heat and electricity. तो ये सभी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, सो दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हीट इसमें से कंडक्टिविटी होता, इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें से कंडक्ट होता है. सो जनरली दे आर गुड कंडक्टर्स सो दैट दे आर आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड्स. तो ये सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सम ऑफ देम आर फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स, सम ऑफ देम आर फॉर्मिंग the covalent compounds one. So generally all these D block elements they forms the paramagnetic compounds, a special characteristic है. So all the D block elements are forming the paramagnetic compounds only. So generally these D block elements they form sometime colored colorless compounds. तो ये सभी element D block element sometime they forms colored compounds, sometime they forms colorless compounds also. So generally these elements have higher ionization potential compared to the S block elements. तो ये सभी elements में ये D block elements का ionization energy, ionization potential, ionization energy को ही हम ionization potential बोलते हैं. So they have high ionization energy, high ionization potential compared to the S block elements one. So if you consider in these D block elements from third B to first B, not the second B, from third B group element to the first B group elements, they are also called as transition elements. तो third B से लेकर first B element तक ये सभी elements को हम transition elements बोलते हैं, because all these elements contain at least one unpaired electrons. तो ये सभी elements में d orbital में कम से कम एक unpaired electron रहता. So from third B to first B all these d block elements they contain at least one unpaired electron in the d orbital, so that from third B to first B all these d block elements are pronounced as
ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये थर्ड बी से लेकर 1b तक ये सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है डी ऑर्बिटल में, तो इसलिए ये सभी एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं हम। बट सेकंड बी ग्रुप एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसा नहीं बोलते हम, बिकॉज सेकंड बी ग्रुप एलिमेंट दे डज नॉट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल। तो थर्ड बी से लेकर 1b तक ये सभी एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये सभी एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसा बोलते हैं। बट सेकंड बी ग्रुप एलिमेंट्स में कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो इसलिए इसको हम सेकंड बी ग्रुप एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसा नहीं बोल सकते हम। सो थर्ड बी टू 1b दे आर ट्रांजिशन, बट सेकंड बी दे आर not transition elements, they are not belongs to transition. So generally the common electronic configuration of these elements is n-1d 1 to 10 ns 1 to 2. So ये 1 minus 10 है, ये 1 to 10 है, so n-1d1 n-1d2 n-1d3 ऐसा पॉसिबल है, ns1 ns2 ऐसा पॉसिबल होता। थैंक यू।